Good morning, all the students. Hi, everyone. Welcome to XAT once again. And today we are going to take the third session in the series of sessions where we are going to train the students for English, for verbal ability, for reading comprehension, and specifically for verbal ability, basically. Because when we talk about OMETs, the focus on RC is not so much. So I generally see so many students, they feel like, sir, anyway, we have done so much for VRC section of CAT. So I think managing the OMETs will be very easy for us. But you people will have to understand, CAT का जो VRC है and what actually comes in OMETs, इन दोनों में बहुत difference है. And जिन बच्चों ने कल वाला मेरा सेशन, परसों वाला मेरा सेशन अटेंड नहीं किया, सबसे पहले strongly suggest करता हूँ whatever questions we have discussed yesterday and day before yesterday, don't miss even a single question. कोई सरप्राइज नहीं है स्टूडेंट्स, अगर कोई क्वेश्चन आज तक आपको एग्जाम में दिख जाए. एंड मोर ओवर द डिस्कशन व्हिच वी आर डूइंग ओमेट्स के लिए, दिस बिकम्स द मोस्ट रेलेवेंट डिस्कशन. तो इंग्लिश में अगर कॉन्फिडेंस डेवलप करना है, अपनी लैंग्वेज स्किल्स को स्ट्रॉन्ग करना है, तो यस, इस पूरी लाइव स्ट्रीमिंग को, इस पूरी सीरीज को मिस नहीं करना है. ओके, चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, वेलकम एंड लेट अस स्टार्ट विद टुडेज सेट ऑफ क्वेश्चंस. जितने भी बच्चे लाइव हैं, एंड मैं जानता हूं बहुत सारे बच्चे इसको एक्चुअली रिकॉर्डेड फॉर्मेट में देखना ज्यादा पसंद करते हैं, बिकॉज वहां पर यू पीपल कैन कंट्रोल द स्पीड ऑफ द सेशन एज वेल. सर की पढ़ाने की स्पीड रिमेन्स इन योर कंट्रोल व्हेन यू वॉच इट इन द रिकॉर्डेड फॉर्मेट. बट स्टिल आई अर्ज ऑल द स्टूडेंट्स, इफ द टाइम इज सूटेबल, टू ज्वाइन लाइव. लाइव में जो इंटरेक्शन होगा, विल बी एबल टू गिव द आंसर्स. आई कैन पर्सनली solve your doubts, whatever queries you people have. My suggestion will be, कभी कभी लाइव ज्वाइन करोगे तो और मजा आएगा. ओके, चलिए, so we are going to start with the session now and 12 questions we are going to take. And वापस से स्टूडेंट्स, आज जो क्वेश्चंस अपन डिस्कस करेंगे, स्नैप एंड NMAT, इन दो एग्जाम्स को मेजरली वी पीपल आर गोइंग टू टारगेट टुडे एज वेल. सबसे पहला क्वेश्चन, कमिंग ऑन द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन. A very interesting question, and this question is purely based on the various poetic devices which are also known as figures of speech. An ambassador is an honest man who lies abroad for the good of his country, is and a soldier fights for a glory and a shilling a day. Students, यहाँ पर and आएगा, and a shilling a day is and dash. And the various options are given to us. You people have to tell me which is the correct answer. In case अगर आप लोगों ने figures of speech अभी तक नहीं पढ़ा, please ensure that ये जो 20-25 most common poetic devices हैं, you people should know the meanings of all these devices with a good number of examples as well. And moreover, students, the best part is once you people understand the meanings of these devices, believe me, एक भी आंसर आपका गलत नहीं होगा. क्वेश्चंस बहुत सिंपल हो जाएंगे द मोमेंट यू अंडरस्टैंड द मीनिंग्स ऑफ दीज पोएटिक डिवाइसेस. चलिए, सो ऑल द स्टूडेंट्स, इन सब के मीनिंग्स पता है या नहीं पता है? आई गेस एटलीस्ट सम ऑफ द पोएटिक डिवाइसेस यू माइट बी नोइंग. जैसे फॉर एग्जांपल हाइपरबली. नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबली? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपरबली? हाइपरबली का मतलब होता है चीजों को एग्जैजरेट करना, बढ़ा चढ़ा कर दिखाना. मेनी टाइम्स यू पीपल माइट हैव नोटिस्ड, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी टीचर ने कुछ पढ़ाया, स्टूडेंट को नहीं समझ में आया, वो एक बार पूछता है, 2 बार पूछता है, और उसके बाद टीचर को गुस्सा आ जाता है. एंड द टीचर सेज, 50 बार तुझे समझाया, 100 times I have taught you. So students, literally 100 times one ही understand, but this becomes an example of hyperbole. तो हम कई बार चीजों को बहुत exaggerate करते हैं. So that becomes an example of hyperbole. For example, oh, you don't know this? Everyone knows this. So when I say everyone knows this, do I literally mean to say that everyone knows this? No. But that also becomes an example of hyperbole. Okay? Then coming on, students, climax का मतलब है ending. Okay, climax is ending. But there is one more poetic device and that is anticlimax. Anticlimax का मतलब है just excitement के साथ ending होनी चाहिए, उस तरह की ending नहीं होना. तो वी वर एक्सपेक्टिंग दैट कि मूवी इतनी शानदार है तो एंडिंग भी कुछ गजब की होगी. बट जब हमने एंडिंग देखा तो वी फेल्ट लाइक
it is not matching our expectation. The students, when such an ending is there, it is known as anti-climax. Then irony, I guess you people very well understand what is the meaning of irony. And irony, students, you people should know. There are multiple types of ironies. So one is verbal irony. For example, किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, किसी स्टूडेंट की हैंडराइटिंग बहुत खराब है. Still I say, wow, यार, क्या wonderful handwriting है. So what is this? I said, क्या wonderful handwriting है. But actually इसका जो meaning है, students, वो just opposite है. This becomes an example of verbal irony. कई बार स्टूडेंट्स एक और आयरनी होती है जिसको कहते हैं सिचुएशनल आयरनी. जस्ट इमेजिन अगर ट्रैफिक पुलिस वाला वो खुद ही ट्रैफिक रूल्स को फॉलो ना करे, तो दैट बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ सिचुएशनल आयरनी. इन द सेम मैनर, एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने पहले भी कभी लिया था, जैसे बेग. नाउ यू पीपल वेरी वेल नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बेग. सो व्हेन आई से बेग, ओके, हमको पता है बड़ा, बट यू पीपल सी दिस वर्ड का मीनिंग ही बड़ा है. How come that word is so small? So even this becomes an example of situational irony. Understand? So in this manner, if you just notice, kitni tarah ki irony, okay, will be visible, and you people can actually find out such things. Cliche का मतलब होता है something which is very boring, commonplace. Something which is boring, very boring and commonplace. Cliche को हम लोग और कह सकते हैं students, something which is corny, insipid, dull, bland, vapid. Okay, many synonyms are possible. एक और बहुत अच्छा सा फ्रेज है run of the mill. Run of the mill, इसका भी मतलब होता है something which is very common, cliche, stereotyped. Understand? Pun. Now what is the meaning of pun? When you play with words. When you play with words. Okay? जैसे मैंने पहले कभी एक एग्जांपल दिया हो, अब्राहम लिंकन का एक बड़ा फेमस सा स्टेटमेंट है. What is a democracy? Where the government is by the people, of the people, and for the people. But you people see, the modern definition of democracy now should be like, it is by the people, it is of the people, and it is for the people. Now you people see, what I'm doing, I'm playing with the homophones. ये जो similar sounding words होते हैं, to play with such a similar sounding words, okay, this becomes an example of pun. So pun में students will play with words and we try to create some humor out of it. तो इसको अपन pun कहते हैं. Understand? जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं CBSE. अब CBSE का फुल फॉर्म क्या होता है? Everyone knows. Okay, everyone knows. ये क्या बन गया? हाइपरबोली. But anyway, literally CBSE का फुल फॉर्म तो सबको पता ही होगा. It is not hyperbole, but CBSE का फुल फॉर्म होता क्या है? तो Central Board of Secondary Education. Isn't it? तो जो मैंने लिखा बिल्कुल सही है स्टूडेंट्स. द फुल फॉर्म ऑफ CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन. नो, इट इज नॉट. तो गलती क्या है? ये जो बोर्ड की स्पेलिंग है स्टूडेंट्स, ये गलत है ना? स्पेलिंग क्या होनी चाहिए बोर्ड की? BOARD. सो व्हेन आई से सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन, तो स्टूडेंट्स, दिस आल्सो बिकम्स एन एग्जांपल ऑफ अ पन. ओके, एंड मोreover you people see, ये जो पूरा सेंटेंस है, एन एम्बेसडर इज एन ऑनेस्ट मैन हु लाइज अब्रॉड. अब स्टूडेंट्स आप देखो, ये जो लाइज है ना, इट कैन हैव टू पॉसिबल मीनिंग. लाइज, एक तो इसका मतलब होता है ही लिव्स देयर, ही स्टेज देयर, और एक लाइज, झूठ बोलना, ही लाइज अब्रॉड. तो नाउ यू पीपल अंडरस्टैंड लाइज मैं कहना क्या चाहता हूँ, बट सेंस क्या आ रहा है. देयर आर टू मीनिंग्स ऑफ लाइज एंड आई एम एक्चुअली प्लेइंग with the meanings of the words and I'm creating some humor out of it. So this is actually an example of a pun. And students, the second one, a soldier fights for a glory. कितनी बड़ी बात है. And a shilling a day. कहाँ आप glory की बात कर रहे हो? A soldier fights for a glory. And then you say he fights for a shilling a day. So that becomes an anti-climax. किस हाइट पर ये पैसेज था, ये सेंटेंस था, और हमने उसको कहाँ डिप कर दिया? हमने बोलना स्टार्ट कर दिया कि सोल्जर फाइट्स ओनली फॉर अ शिलिंग अ डे. शिलिंग इज मनी ओनली. ओके, जैसे रुपी एंड पैसा होता है, वैसे ही चीनी और बहुत सारे देशों में शिलिंग होता है. शिलिंग अ डे. तो एंटी क्लाइमैक्स. अंडरस्टैंड? दिस बिकम्स द बेस्ट आंसर. ओके, लिथोटस एंड ओनोमाटोपिया. ये दोनों स्टूडेंट्स, यू पीपल ट्राई टू फाइंड आउट आखिर इसका मतलब क्या होता है.
litotus and onomatopoeia. अगर मैं कहता हूँ students if you join these sessions at least you will not get bored. अब जब मैं कहता हूँ you will not get bored, what is it? At least it is not a waste of time. So what is it? This becomes an example of litotus. अब ये litotus होता क्या है? With more examples you people try to understand and थोड़ा सा रिसर्च करो, पढ़ो, मजा आएगा. चलो अगला क्वेश्चन लेते हैं स्टूडेंट्स. A direct question based on vocab. Rapacious. Now what is the meaning of rapacious? इसका मतलब होता है स्टूडेंट्स and we are supposed to find out the word which is nearest in meaning. Okay, क्या मीनिंग होगा इसका? Anyone? Would you like to give the answer? So rapacious. The correct answer here is this man is basically greedy. Understand? This man is covetous. A greedy person who is always demanding is also known as covetous. He keeps demanding. बहुत सारी चीजें ये डिमांड करता रहता है. ऐसे पर्सन को अपन कहते हैं covetous. This person can also be known as avaricious. Okay, this person can also be known as ravenous, and this person can also be known as voracious. इन सब का मतलब more or less one and the same होता है, greedy होना. Now coming on students, the first one, abstemious. Abstemious का मतलब होता है when a person is self-disciplined. Okay, when a person is self-disciplined. When a person does not consume much of the resources. तो जब कोई पर्सन सेल्फ डिसिप्लिन होता है, बहुत ज्यादा रिसोर्सेज यूज नहीं करता, कम रिसोर्सेज में, दिस मैन इज मिनिमलिस्ट, दिस मैन इज ऑस्टियर. एब्स्टेमियस का मतलब होता है बहुत कम रिसोर्सेज में जीना. दिस मैन इज सेल्फ डिसिप्लिन. अंडरस्टैंड? एब्स्टेमियस. बट एनीवे दिस इज नॉट द करेक्ट आंसर हियर. Rendezvous, mind the pronunciation. It has to be spoken as rendezvous. I guess it's a French word. And rendezvous, the meaning of this word is a meeting place, rendezvous. I still remember when I was in my hostel in Pune, there was a famous hostel there, Firodia Hostel, and अभी भी है in fact. तो वहाँ पर हमारा जो annual sports meet हुआ था, in 2001 I'm talking about, वो जो sports meet था उसका नाम था rendezvous. So rendezvous का मतलब है a meeting place. Understand? Rhetoric is to exaggerate. चीजों को बढ़ा चढ़ा कर बताना, so that you can convince others, so that you can persuade others. And sometimes to make the things rhetoric, you may use a bit of lie also. हो सकता है हम थोड़ा सा झूठ भी बोलते हैं. You may speak something, okay, which may not be 100% truth to persuade the other persons. Rhetoric का मतलब है चीजों को बढ़ा चढ़ा के exaggerate करके बोलना. So generally the opposition parties, they say that Prime Minister Modi's speeches are rhetoric. Rhetoric is that, okay, to make the things impressive. And esurient. Esurient का मतलब होता है greedy होना. So here students, the best answer is fourth option, esurient. Okay. Coming on question number 3. Now see, describe the sentence with the correct option. Shashidharan is the kind of man who prefers to work behind the scenes, having real control over people or organization, especially in secret or without it being knowledge, being public knowledge. So now you people try to understand. Shashidharan is the kind of man who prefers to work behind the scenes. So you people do understand when I talk about Shashidharan, behind the scenes काम करता है, लेकिन इसका कंट्रोल बहुत है, इन्फ्लुएंस बहुत है. तो ऐसा कोई पर्सन होता है तो उसके लिए जो बेस्ट idiomatic usage है, you need to identify that. So having a working knowledge of something, when I say students to have working knowledge of something, इसका मतलब है just to have basic knowledge of something, okay, not being a master of that, just to have a basic knowledge of something. तो यहाँ पर students having a working knowledge of something, इसका मतलब है basic knowledge. Anyway, first option cannot be the correct answer. Pulling the strings. When I say pulling the strings, absolutely correct. So when a person knows how to pull the strings, that means he knows how to control and influence others. The second option becomes the right answer. Having a finger in every pie.
इसका मतलब है मल्टीपल चीज़ों में एंगेज हो जाना, so doing a lot of things and multiple चीज़ों में एंगेज हो जाना. So when I say having a finger in every pie, this actually means to get involved in multiple tasks simultaneously. And strike up a friendship is to begin a friendship. Okay? So anyway, second option becomes the right answer. Question number 4. Identify the correct word to complete the sentence. There is that dash effort made by staff to find the best fit for the client. Now, students, see, all the 4 words are one and the same. So you are supposed to find out the best spelling variant. So this question is actually based on spellings. And I think a very simple one, but still such a question so people can expect in SNAP, NMAT, and CMAT, and Maharashtra CET too. So here the best answer is this one. And students mind the pronunciation also. इसे हम लोग assiduous नहीं बोलेंगे. It has to be spoken as assiduous. Even if students the spelling is D, जो sound यहाँ पर आएगा वो J का sound आएगा. So it has to be spoken as assiduous. Assiduous का मतलब होता है बहुत hardworking होना, diligent होना. So when a person is putting a lot of efforts, when a person is sedulous, so such a person is known as assiduous, hardworking. Let us take a few synonyms of assiduous. Diligent, industrious, wonderful word. Industrious, persevering, sedulous. Again, इसको sedulous नहीं बोलेंगे. It has to be spoken as sedulous. Persistent, tireless, dedicated, and conscientious. Conscientious. तो इन सब का मतलब कहीं ना कहीं होता है हार्ड वर्किंग. रिलेटेड वर्ड्स बहुत सारे हो सकते हैं. वर्कaholic हो सकते हैं. अंडरस्टैंड. Okay, for example, when I say to burn the candle at both the ends, इसका मतलब भी होता है डबल एफिशिएंट होना. इसका मतलब भी एक्स्ट्रा हार्ड वर्किंग होना. तो इस तरह से स्टूडेंट जो पीपल सी बहुत सारे वर्ड्स पॉसिबल हैं एंड बहुत सारे मीनिंग्स भी, बहुत सारे idioms भी. Identify the tense. Now this becomes a very simple question purely based on grammar, where a small sentence is given to us and you need to just identify that tense. Even if students, such questions may not directly come, indirectly, 1 or 2 questions will be based on identifying the tense, identifying the part of speech. Okay? So when I say by next year, I will have completed my degree. So I will have completed. So till a particular point in the future, मेरा ये काम हो चुका होगा. Till a particular time in the future. So here, students, what is needed is future perfect tense. So I will have completed. This becomes future perfect tense. कहीं पर भी will है, इसका मतलब है future, and have completed makes it perfect. So future perfect tense becomes the right answer. Now we are supposed to find out a compound word. In all our life streams, we people have been taking one question based on it. कंपाउंड वर्ड का मतलब 2 डिफरेंट वर्ड्स को मिलाकर जब कोई बनता है, जैसे क्रेडिट कार्ड, रेनकोट, फुटबॉल. ऑल दीज आर एग्जांपल्स ऑफ कंपाउंड वर्ड. So needless to say, the correct answer here is going to be landmark. Okay, absolutely. Well, coming on, students, question number 7. Find the grammatical function of the underlined words. So we are supposed to find out ये जो underlined pair of words हैं, you people have to just to find out it belongs to which part of speech. Yes, and all the students, you people should know there are how many parts of speech? 8. So noun, pronoun, verb, adjective, adverb, conjunction, preposition and interjection. And in सबका definition पता होना चाहिए. जिन बच्चों को लगता है कि सर practical knowledge is very important and theory portion is not much important, believe me students, it's a myth. Without having a strong foundation of the theory portion, practical students makes no sense. सबसे पहले तो theory को strong करो, and that will give you immense confidence and boost in your practical approach as well. So when I say not only but also, this actually becomes an example of a conjunction. And if I ask which type of conjunction it is, so you people should know. Majorly there are 3 types of conjunctions. One which is known as correlative, one which is known as coordinating, and one which is known as subordinating. So when I talk about correlative conjunctions, either or, neither nor, not only but also, both and,
All these are examples of correlative conjunctions. तो ये जो not only but also है, this actually becomes an example of correlative conjunction. Okay? तो ये जितनी भी parts of speech होते हैं, इन सबके बहुत सारे multiple types होते हैं. एक बार अगर उसे भी पढ़ लोगे तो definitely confidence और high हो जाएगा. Okay? चलिए, coming on students, the next one, question number 8. A direct idiom is given to us, and among the 4 options, you need to find out the meaning of the given idiom. Which is the right answer? Give it a whirl. When I say students, give it a whirl, the correct answer here is to give a try. Which is the best answer? In a preoccupied, disconnected, or unfocused state of mind. No. To turn in the opposite direction very quickly or suddenly, to display a huge, boundless amount of energy, and to give something a try. So students, the correct answer is to give something a try. Okay? So give it a whirl का मतलब होता है to give something a try. Yeah? Very nice. जो भी students live हैं, you people can keep giving the answers as well. Now this becomes a question which is based on a vocab, a word. So this becomes a question based on vocab, and the word is demonstrate. Demonstrate. I guess उसमें spelling थोड़ी सी गलत है. TRATE होना चाहिए. Demonstrate. So what is the meaning of demonstrate? The meaning of demonstrate is to throw something or someone out of a window. The correct answer is third option. Demonstrate का मतलब होता है किसी चीज को खिड़की से फेंक देना. या कभी कभी स्टूडेंट्स हम लोग जब किसी को जॉब से निकालते हैं, when any master fires his servant, वहां पर भी स्टूडेंट्स हम ये वर्ड यूज करते हैं demonstrate. Okay? तो demonstrate का मतलब होता है throw out of a window. The third option becomes the correct answer. 3 more questions to go. Question number 10. Describe the sentence with the correct option. With only half the syllabus studied, I had to make great hurry to be ready for the exam on Monday. The students, to make great hurry. इसका मतलब है, I mean to say that we are running short of time. And when we are running short of time, which is the best idiom which is used for it? First option says work against the clock. Absolutely. जब स्टूडेंट्स आपके पास समय कम होता है और आपको फास्ट काम करना होता है, तो यस, द करेक्ट आंसर इज वर्क अगेंस्ट द क्लॉक. टर्न द क्लॉक बैक, इसका मतलब है वापस पुरानी कंडीशंस में जाना. ओके, अगेंस्ट स्टूडेंट्स एक तरह से पुरानी कंडीशंस को रिपीट करना. तो टर्न द क्लॉक बैक. अंडर अ क्लाउड, दैट मीन्स अंडर सस्पिशन. स्टूडेंट्स अंडरस्टैंड अंडर अ क्लाउड का मतलब क्या होता है? अंडर सस्पिशन. Whenever a person is under suspicion, for example, someone has stolen my mobile. अब अगर मुझे मिस्टर ए पर डाउट है, तो मिस्टर ए इज अंडर अ क्लाउड. दैट इज द मीनिंग हियर. बर्न द मिडनाइट ऑयल, इसका मतलब है खूब मेहनत करना, टू पुट एक्स्ट्रा एफर्ट्स. दैट इज द मीनिंग ऑफ बर्न द मिडनाइट ऑयल. तो लिटरली इसका मतलब बर्न द मिडनाइट ऑयल नहीं होता. आप देखोगे पुराने जमाने में रात को स्टूडेंट्स दीपक जलाकर, लालटेन जलाकर पढ़ा जाता था, तो वहां से ये फ्रेज निकला, बर्न द मिडनाइट ऑयल. इसका मतलब है दिन रात एक करना, to move mountains and to put extra efforts. Okay? And then students, coming on question number 11. Identify the correct option to complete the sentence. Yes. I guess you people can give the answer to this question. I want जो भी students live हैं. Yes. Hello, I have got some answers, and सारे बच्चे, please ensure that if you people really love the collection of the questions, the way of explanation, keep showering your love and affection and keep spreading the message and keep connecting your juniors, your friends with this particular channel. In the coming days, students, wonderful things are going to happen, and you people will see XAT leading nationally. Identify the correct option to complete the sentence. I-9 o'clock. Yes. चलो एक एक ऑप्शन लेते हैं. आई एम वेटिंग हियर सिंस 9 o'clock. स्टूडेंट्स, अगर मैं सिंस लेता हूँ, सिंस 9 o'clock, तो यहाँ पर आई एम वेटिंग प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस वोंट बी करेक्ट. जब भी अपन यूज करते हैं तो वहां पर स्टूडेंट्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वी शुड प्रेफर. आई हैव बीन वेटिंग हियर सिंस 9 o'clock.
The second option becomes the correct answer. Past continuous is not correct, and past simple is also not correct. So I have been waiting here since 9 o'clock. And then students, the last question of the day, you will have to tell me which option is an incorrect sentence. So recently he admitted to his girlfriend he had lied to her. Okay? क्या लगता है? चलो जो भी बच्चे लाइव हैं प्लीज गिव दी आंसर. एक बार आप लोगों का आंसर आ जाए. आफ्टर दैट आई विल कमेंट. यस, भूमिका, सागर, नियति, come on, all the students give the answer. So when I say identify the incorrect sentence, तो चार ऑप्शंस में से which is correct, which is incorrect. मतलब correct answer कौन सा है? Yes. Students, the correct answer here is recently he admitted to his girlfriend he had lied to her. इसमें तो there is no mistake at all. So this sentence is okay. He recently admitted to his girlfriend he had lied to her is okay. He admitted to his girlfriend he had recently lied to her. Okay. He admitted to his girlfriend recently he had lied to her. Students, the correct answer is fourth option. And why the correct answer is fourth option? Because जिस जगह हमने recently को place किया वहां पर स्टूडेंट्स ये क्लियर ही नहीं होता है कि recently admitted के लिए आ रहा है या recently he had lied के लिए आ रहा है. Students, if you read all the four sentences and compare, you will actually come to know rest the three sentences are absolutely okay. They are clear, they are categorical. But if I talk about the fourth one, there is a bit of ambiguity here. There is a bit of confusion here. आखिर ये जो recently adverb है ये किस action के लिए आ रहा है? उसने admit recently किया या उसने झूठ recently बोला? So fourth option is not correct because okay, clarity is not there. So this is the point. Okay, चलिए स्टूडेंट्स फिर मिलेंगे आपसे. तो ये पूरी सीरीज चलती रहेगी and many more such sessions we are going to bring. If you want me to take a class on a particular topic, do let me know. तो इस पर भी अपन बात करेंगे. और हमारी लास्ट ईयर की जो प्लेलिस्ट है स्नैप को लेकर NMAT को लेकर, उसके एक एक वीडियो को वॉच करना. लॉजिकल रीजनिंग एंड वोकैब दोनों को स्टूडेंट्स हमने उसमें कवर कर रखा है. तो प्लीज इंश्योर दैट उस प्लेलिस्ट को वॉच जरूर करें. राइट, चलो, थैंक यू सो मच. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू भूमिका, सागर, नियति, everyone for being with us. Thanks.